Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the class 9th biology, the most important questions from both categories, short and long. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द बायोलॉजी, सेकंड इज़ डिफाइन एनाटॉमी, थर्ड इज़ डिफाइन टेक्सोनोमी, फोर इज़ define genetics and biotechnology, 5 is what are parasites, 6 is define farming, horticulture and agriculture, 7 is differentiate between the population and community, 8 is write the scientific name of crow, frog, mustard and onion, 9 is define fossil, 10 is difference between the unicellular and the multicellular organism। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। द फर्स्ट इज़ राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको प्रिपेयर कर लें। सेकेंड इज़ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। थर्ड इज़ गिव 4 करियर्स इन बायोलॉजी। फोर इज़ राइट अ नोट ऑन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपने बायो के पेपर की तैयारी करने के लिए जो पेपर पेयरिंग स्कीम है उसको लाजमी फ़ॉलो करना है, जो कि मैंने थोड़ा सा पहले वीडियो अपलोड की थी। और फिर आपने यहाँ से पेपर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रेपरेशन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरी एंड द लॉ, सेकेंड इज़ व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड better than qualitative observation, third is differentiate between the quantitative and qualitative observations with example, fourth is define bioinformatics, fifth is what is incubation period, sixth is define scientific method and biological method, seventh is what do you mean by the biological problem, eighth is write the observation made by the king AFA about malaria. 9 is 9 write the characteristics of good hypothesis. 10th is how we can make hypothesis. 11 is what is meant by deduction. सेकेंड चैप्टर से पॉसिबल नहीं है कि 90% चांसेस हैं कि कोई भी आपका लॉन्ग नहीं आएगा। तो अब हम थर्ड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट शॉर्ट इज़ डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज़ briefly describe the importance of biodiversity, third is write the aims of classification, fourth is what do you mean by the binomial nomenclature, fifth is describe the relationship between the taxonomy and systematics, sixth is differentiate between the term distinct and endangered species, seventh is differentiate between the nutrition methods in plants and fungi, eighth is why viruses are not included in any kingdom, 9 is what is meant by deforestation, 10 is how the scientists give scientific names to living organism, 11 is what are monera, 12 is write the names of the 5 kingdom classification or 5 kingdom system। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में भी बताती चलूँ कि जब भी आपने कोई भी डेफिनेशन करनी हो तो आप लाजमन अगर उसके रिलेटेड एग्जाम्पल है तो उसको करें, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल कंपलसरी होती है। 1 मार्क्स इज़ फॉर डेफिनेशन एंड द सेकेंड नंबर इज़ फॉर योर एग्जाम्पल। तो अगर पॉसिबल एग्जाम्पल हो तो आप लाजमन उसको राइट करें।
Now we will discuss the most important long questions of chapter number 3. The first is how human activities are affecting biodiversity. Second is write the aims and the rules of binomial nomenclature. Third is write the aims and the rules of classification. Four is give the importance of biodiversity. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की. द फर्स्ट शॉर्ट इज डिफाइन द सेल थ्योरी, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स. सेकंड इज राइट द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. थर्ड इज डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन, facilitated diffusion and active transport. Fourth is what is meant by the hypertonic and hypotonic solutions. Fifth is what is the Golgi apparatus and Golgi complex. Sixth is what is osmosis. Seventh is differentiate between the endocytosis and exocytosis. Eighth is differentiate between the eukaryotic and prokaryotic cells. 9 is what are the voluntary and involuntary muscles. 10 is write the name of two tissues found in plants. 11 is write about the phagocytosis and pinocytosis. 12 is write the function of plasmodesmata. 13 is what is meant by the diffusion and facilitated diffusion. 14 is define magnification and resolution. डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं. द फर्स्ट लॉन्ग इज राइट अ नोट ऑन मैरी stemmatic tissues in plants and muscles tissues in animals. Second is write the structure and functions of the nucleus. Third is write the functions of the cell membrane and cell wall. Four is what is cytoskeleton, give its importance. Fifth is write a note on endoplasmic reticulum, epidermal tissues. Dear students, चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट शॉर्ट है वो है डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स मेजर फेजेस. सेकंड इज डिफरेंशिएट बिटवीन द सोमैटिक सेल्स एंड germline cells. Third is what is regeneration. Four is how sexual reproduction occurs in hydra. Fifth is differentiate between the benign and malignant tumors. Six is what is metastasis. Seventh is differentiate between the mitosis and meiosis. Eighth is what is crossing over. Nine is what is disjunction and non-disjunction. Tenth is what are apoptotic bodies. 11 is what is pragmoplast. 12 is what is meant by G0 and G1 phase. 13 is define sexual asexual reproduction with an example. 14 is what is meant by cytokinesis and karokinesis. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. एंड द फर्स्ट शॉर्ट इज व्हाट आर बायो catalyst. Second is what are enzymes. Third is differentiate between the substrate and products. Fourth is what is active energy, activation energy. Fifth is define cofactor, coenzyme and prosthetic groups. Sixth is write about the use of enzymes in paper industry. Seventh is how enzymes are denatured. Eighth is in what way enzymes reduce the activation energy. Nine is differentiate between the anabolism and catabolism. Tenth is what is meant by the optimum pH for an enzyme. 11 is write about the induced fit and lock and key model of enzyme action. स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट को देख लेते हैं. डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स. सेकेंड इज व्हाट इज एटीपी.
write names of its subunit. Third is write the significance of anaerobic respiration. Fourth is differentiate between the aerobic and anaerobic respiration. Fifth is define cellular respiration. Sixth is what is the electron transport chain. Seven is differentiate between the alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Eighth is compare respiration and photosynthesis. Nine is what is glycolysis. 10th is what is meant by the light reaction and the dark reaction. 11 is what is the electron transport chain, how is it formed. 12th is briefly explain the oxidation and reduction processes. Now we will discuss its important long questions, and its first long is differentiate between the light reactions and the dark reactions. Second is write the role of light and chlorophyll in photosynthesis. Third is describe the limiting factors in photosynthesis. स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं. द फर्स्ट short is differentiate between the bolus and the gym. Second is what do you mean by nutrition? Third is what are the saturated and unsaturated fatty acids? Fourth is write the sources and the functions of the vitamin A. Fifth is what are the water soluble and the fat soluble vitamins. Sixth is write the sources and the functions of the vitamin D. Seven is write the functions of dietary fiber. Eighth is what is balanced diet. Nine is define malnutrition. Write names of its types. 10th is write steps of digestion in human. 11 is write the functions of the oral cavity. 12th is what is parasitalysis. 13 is what is an appendix. 14 is what is anemia. 15 is write the symptoms of ulcer. 16 is write the causes of constipation and diarrhea. 17 is what is obesity. 18 is write the names of two major kinds of fertilizers. Dear students, अब हम most important long questions of chapter number 8 को देखते हैं. The first long is describe the role of liver in the digestion of food. Second is describe the process of digestion in small intestine. Third is describe the problems related to the nutrition. Fourth is write the importance of fertilizers for plants. स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 9 के विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 9 इज डिफाइन कोहेशन टेंशन थ्योरी. Second is what is meant by the source in the sink. Third is write the functions of pericardial fluid. Four is define systole and diastole. Five is what is the role of potassium ion in opening and closing of stomata. Six is what is myocardial infarction. Seven is what is the pulmonary and systematic circulation. Eight is who are universal donors and universal recipients. 9 is what is leukemia. 10 is write the composition of the blood plasma. 11 is what is transpiration. 12 is what is antigen. 17 is who are called the universal donors. 18 is write to differences between the arteries and the veins. डियर स्टूडेंट्स अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग इज हाउ वेरियस factors affect the rate of transpiration.
Second is write the causes, treatment, and prevention of myocardial infarction. Third is write a note on ABO, blood group system. Four is transpiration is an is unnecessary. You will explain. इसमें आपने significance of transpiration लिखनी है. Fifth is structure of human heart with diagram. Six is importance of RH factor in blood transfusion. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में एक और भी लॉन्ग करना है जिसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज. इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram. And thank you so much for listening me.